द प्रोडक्ट एज वेल। और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी इंक्लूड किया था हमने इन दैट केस। कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमें रिक्वायर्ड होती है बिकॉज पंजाब के लोग डिफरेंट सेट ऑफ डिजाइन्स प्रेफर करते हैं, कलर्स प्रेफर करते हैं, सिंध के लोग डिफरेंट डिजाइन और कलर्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। सो इन दैट केस अगर हर रीजन से लोग जो हैं वो मौजूद होंगे टीम के अंदर, डिजाइनिंग टीम के अंदर, दैट वुड बी बेनिफिशियल। अब ये सब करना पॉसिबली नहीं हो सकता शायद, बिकॉज इट वुड बी वेरी कॉस्टली। सो उसको अगर उस चैलेंज को हमने किस तरह किया है कि अगर हम फ्रीलांसिंग पे या कॉन्ट्रैक्चुअल उस पे एम्प्लॉयमेंट पे डिजाइनर्स को हायर करें, एंड जो भी डिजाइन उनका पीक सीजन्स में प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट का फेज होता है उसमें अगर हमें पसंद आ रहे हैं उनके डिजाइन, तो वो डिजाइन सेलेक्ट करके डिफरेंट रीजन्स के 5 बेस्ट डिजाइन वो अपने हमें दे दें एज अ कंपनी, और हम उनको जो है लॉन्च कर दें और उसके हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन दे दिया जाए जो भी डिजाइन उनके सेलेक्ट किए जा रहे हैं या जो भी डिजाइन उनके पसंद आ रहे हैं जो कंपनी यूज कर रही है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, बिकॉज इक्विटी मीन्स के अगर हमें इक्विटी जो मैम ने बताया था, मुझे अपनी आवाज ही खो रही है, जो मैम ने बताया था इक्विटी के बारे में, दैट मींस इक्वालिटी तो हर बंदे को हर पोजीशन के ऊपर सेम सैलरी दी जाए, दैट्स इक्वालिटी। बट इक्विटी इज कि अगर एक बंदा ज्यादा रिक्वायर कर रहा है, जो नीड उसकी ज्यादा है, तो उसको ज्यादा दिया जाए, बिकॉज मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिलीज। सो इन दैट केस उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान अगर किया जाए, सक्सेशन प्लानिंग उनके लिए ज्यादा अच्छी की जाए, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर दैट पोस्ट। Yes. इसके अलावा इफ आई मिस्ड आउट समथिंग, रहमान प्लीज या कोई और मेंबर रूम 1 में से कोई ऐड ऑन कर दें प्लीज। No, Mama, you have covered all aspects we have discussed in the meeting. Thank you. अच्छा उमैमा, आपने ये डिस्कस किया ना कि फॉर आपने टेक्सटाइल सेक्टर को लिया यहाँ पे, तो वहाँ पे आपने कहा फाइन आर्ट्स के लोगों को लेते हैं, फाइन आर्ट्स में फीमेल ज़्यादा होती हैं, और बहुत सी जगहों पे ये देखा गया कि फीमेल ज़्यादा हो जाती हैं ना डिज़ाइन में या जो भी फाइन आर्ट्स से रिलेवेंट चीज़ होती है ना। तो फिर या एचआर में भी ये देखा गया है, एचआर में भी फीमेल की रेशियो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मेल की निस्बत, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखा गया ना। तो वहाँ भी ऑलरेडी तो हम तो बात करते हैं इंक्लूजन की, हम तो बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो वहाँ पे भी तो एक डाइवर्सिटी चाहिए ना कि मेल आर्टिस्ट को आप इंक्लूड करें। बिल्कुल चाहिए। वो भी एक हम तो सबसे पहले तो एचआर में डाइवर्सिटी होगी तो हम किसी और डिपार्टमेंट को डाइवर्सिटी के बारे में बोल सकेंगे ना, बीइंग एचआर प्रोफेशनल्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अक्सर जगहों पे ये देखा गया है कि जैसे मैंने बड़ा सा सर्व किया आईसीआई पाकिस्तान के एचआर में और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ना, तो वहाँ पे एक दो लोग होते थे जो मेल होते थे, बाकी सारी की सारी फीमेल्स ही होती थी। और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये डायरेक्टिव आता था कि आप लोग अपने डिपार्टमेंट में तो डाइवर्सिटी लेके आए, ठीक है, और अपने डिपार्टमेंट में तो इंक्लूजन लेके आए, तो बाकी हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता था। और फीमेल्स का टेंडेंसी होती थी कि वो प्रेफर करती थी कि जी एचआर में ही जाएं, जो आईबीए की ग्रेजुएट्स हैं या लम की ग्रेजुएट हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यूजुअली सर यही है मसला कि एचआर वाली साइड पे फीमेल वो ज्यादा होता है रेशियो। जी बिल्कुल ना, ऐसा ही है, वहाँ पे होता है। स्पेशली एडमिन में मेल ज़्यादा होते हैं, बल्कि एडमिन में मेल ही को देखा गया ना ज़्यादातर एडमिन का जो पार्ट है। लेकिन ओवरऑल एचआर के अंदर ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे आपने डिज़ाइन है और टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स होते हैं या फाइन आर्ट्स के लोग होते हैं जिन्होंने डिज़ाइन, वहाँ पे भी फीमेल बहुत ज़्यादा होती है ना। बिल्कुल हाँ, उससे हो जाती है। तो वो भी बहरहाल एक चैलेंज है कि डाइवर्सिटी को कैसे वहाँ पे इंक्लूड करें ना। इक्विटी और इक्वालिटी को भी आपने बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट किया। इक्वालिटी तो सबके होनी चाहिए ना। इक्विटी ये कि हो सकता है कि किसी की रिक्वायरमेंट कुछ हो ना, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन की सर्कुलेशन करवानी, उसके लंग्स काम ही ना कर रहे हो, बिल्कुल सर्वाइव ही ना कर सके ना उस तरह से। बट दैट आल्सो नीड्स टू बी सिस्टमैटिक, बिकॉज वो फिर फेवरेटिज्म में और बायसनेस में भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो ज्यादा ही इक्विटी की साइड पे हम जा रहे हैं और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है या सिस्टमैटिक नहीं है तो। जी बिल्कुल, ये है, इस तरह से किया जाता है, चीज़ों को सिस्टमैटिक किया जाता है। लेकिन ये है कि मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूर फुलफिल की जा रही होती है ना उन चीज़ों में। जी जैसे अब फीमेल की बात करते हैं ना, औरत मार्च होता है या कहते हैं जी फीमेल को इक्वल राइट मिले,
तो बेसिकली इक्वालिटी नहीं चाहिए होती, इक्विटी चाहिए होती है ना, इक्विटी चाहिए बिल्कुल। यानी इक्वल बेसिक पे सेम हो, वो भी सेम नहीं है ना। और जो ऊपर के रैंक्स हैं, टॉप टियर के रैंक्स हैं, उनमें फीमेल को लेके आने का मौका मिले, प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सीईओ हो, बिल्कुल। तो इक्वालिटी तो है, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं, लेकिन इक्विटी प्रोवाइड नहीं की जाती है उनको ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये चीज़ें हैं, तो इनको भी थोड़ा डिस्कस करना So I जरूरी was होता है। listening to this, Mansoor साहब, so I want to add into it this, जैसे उन्होंने डिजाइन इंडस्ट्री की बात की, और उसमें एक चीज जो मैं आपसे ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने एक चीज डिस्कस की कि इट इज अ फीमेल ओरिएंटेड करियर। एक्चुअली वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस एज वेल कि ये फीमेल Exactly. ओरिएंटेड है। एनी मेल कैन बी एज गुड अ डिजाइनर एज अ फीमेल। तो हम इन चीजों को True. जैसे स्टीरियोटाइप कहते हैं ना, उससे भी हमें बाहर निकलना है। जब हम बिल्कुल डाइवर्सिटी बिल्कुल। की बात करते हैं, so this is the one of the diversity that you have to accept a male in a position which normally you think for a female. Female, exactly. इसमें अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में लाइक इफ यू से दैट फीमेल आर द टीचर्स, मोस्टली फीमेल से एसोसिएटेड है ना टीचिंग करियर, बिल्कुल। स्पेशली इन अर्ली इयर्स और प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल तक हम स्कूल कहते लेवल हैं कि पे बिल्कुल। फीमेल्स पढ़ाएंगी। व्हाई कांट वी हैव मेल इन दिस फील्ड? only in our Pakistan के culture में, और इधर है, internationally this is not there. People there are different like males are also teaching in early primary Montessori level, level. Yes, yes. Montessori level. तो हमें इस चीज को भी लेकर आना है. This is again diversity, this is again equity. Maybe a boy wants to work in an education industry, a boy wants to work in a fashion industry. तो हम इन स्टीरियोटाइप से हमने निकलना है, उसी को हम इंक्लूजन कहते हैं. इंक्लूजन तभी होगी ना जब हमको एक्सेप्टेंस देंगे कि यस यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस फील्ड एज वेल. तो दिस इज बेसिक एग्जांपल जो हम जिसको हम लेते हैं, तो जिसको अगर हम इंप्लीकेट करें, सेम इज फॉर फीमेल्स. आप अपने सिनेरियो में देख लो, इन आवर कंट्री कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, स्पेशली फोर्सेस में, पहले देयर वाज नो पोजीशन फॉर एनी फीमेल. नाउ फीमेल आर गोइंग देयर, तो हम हम कितनी प्राइड लेते हैं दैट वुमेन आर देयर इन आवर फोर्सेस. तो प्राइड की बात तो है, बट दिस इज व्हाट डाइवर्सिटी इज, दिस इज व्हाट इंक्लूजन इज, उनकी एक्सेप्टेंस. So this is how we, so when you do the recruitment, तो अब आपने देखिए जब आपने ये एक्सरसाइज की है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं कि yes we can fix these things here. Exactly. अच्छा, रिक्रूटमेंट के टाइम पे जब हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं या हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं डाइवर्स जेंडर को या डाइवर्स एज ग्रुप को, तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ दैट सेक्टर या दैट फील्ड. अगेन वो जो साइकिल है, वो स्टीरियोटाइप है, वो ऑटोमेटिकली हम तोड़ने की उसमें हम साइकिल में आ ब्रेक करेंगे. Exactly. जब हम रिक्रूटमेंट का एक बेसिक रूल होता है कि व्हेन यू आर डूइंग द रिक्रूटमेंट, आप जब उसकी, जैसे अभी आपने पैरामीटर्स आपने रख ली, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो जनरली उन्होंने अभी पिछले कोई 2-3 सालों में बहुत सारी फीमेल्स को ऐड किया था जस्ट टू से कि वी आर डाइवर्स. दे आर ओनली जेंडर डाइवर्स. हमें सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी की बात नहीं करनी है. जब हम एचआर में हैं तो हमें हर तरह की डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है और उसकी एक्सेप्टेंस लेकर आनी है. सो थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन. नाउ लेट्स मूव ऑन. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन. अच्छा, इसमें ना एक रूम रह गया था ना. जी सर, आप करें, मैं इतने में इसको वो ऐड करती हूँ. हाँ, वो करते हैं. अच्छा जी, रूम 1 तो हमारा डिस्कस हो गया. रूम 2 से जो लोग थे वहाँ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं ना. ठीक है जी सर, आई एम रिप्रेजेंटिंग रूम 2 हियर. सो वी वर डिस्कसिंग, वी हैव ऑप्टेड द सेक्टर इज एजुकेशन सेक्टर, और एजुकेशन सेक्टर में वी हैव ऑप्टेड फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि फाइनेंस में वही बंदा अच्छा होगा जो कोई मेल होगा, उसका बैकग्राउंड सीए होगा, सीएफए होगा, या उसके पास इंटरनेशनल डिग्री होगी. एंड वी ऑलवेज से कि जो मेल्स हैं दे आर गुड विद नंबर्स एंड एवरीथिंग, और फीमेल्स जो है वो इतनी ज्यादा सुपर स्मार्ट नहीं होती विद द नंबर्स. So इसमें we have the position of manager finance. तो हमने advertisement में, recruitment में हमने gender open किया है. There is no biasness, no male and female, both of the same caliber. जो भी आता है we will induct the candidate. Ethnicity पे हमारा there is no restriction on the area. It is open to all areas and age group. Obviously we are hiring a mature person for this position as well.
सो अगर हम हायर करते हैं CFA और CA एंड MBAs को भी हमने टारगेट किया है, और MBAs विद फ्रॉम द गुड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज, सो दे आर आल्सो द गुड एडिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. एज वी टॉक अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी, तो वो भी ओपन टू ऑल है, पंजाब, बलूचिस्तान, KP एंड एवरी पर्सन फ्रॉम दैट. अच्छा, अगर हम इसमें एजुकेशन की बात करें तो हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का हमें CA डिग्री चाहिए, CFA चाहिए, या इंटरनेशनल डिग्री को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं. वैसे पाकिस्तान में है ट्रेंड कि हम इंटरनेशनल डिग्रीज को हमेशा प्रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बैकग्राउंड दे हैव मोर एक्सपोजर, होराइजन उनका काफी ब्रॉड होता है. लेकिन इसमें सब ओपन टू ऑल है, हम किसी को इतना बाइस नहीं कर रहे हैं, दैट इज ओपन टू ऑल. एज वी टॉक अबाउट द सोशल साइट, हमने इसको कहाँ कहाँ एडवर्टाइज किया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सारा, तो इट्स ऑन ऑल द सोशल वेबसाइट्स, जो हमारी कंपनी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है. एंड सेकेंडली, हमने इंक्लूजन को मैंडेट इम्पोर्टेंट करने के लिए हमने इसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हम बाइस ना हो जाए किसी एक क्लास की तरफ या किसी एक डिग्री की तरफ टिल्ट ना हो जाए. इसमें ओपन होगा, जितने भी लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, इट्स अ ओपन मेरिट पोजीशन होगी हमारे लिए. और अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो ग्रुप 2 से जो भी हमारे मेंबर है, रेहान एंड द अदर पीपल, दे कैन ऐड समथिंग हियर एज वेल. और दैट्स इट. इक्विटी में हमारे पास था, इफ द पर्सन इज फ्रॉम द इंटरनेशनल डिग्री बैकग्राउंड, ये उसका बहुत MNCs में बहुत एक्सपोजर है, तो ऑब्वियसली वी कैन आस्क गिव देम द हायर पैकेजेस और द बेनिफिट्स. और जो लोग इतने ज्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है, जिनके पास इतनी इंटरनेशनल डिग्रीज नहीं, ऑब्वियसली हम उनको वैसे ही ऑफर करेंगे जो कि उनके पैकेजेस है. सो इसमें थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी बाइसनेस भी आती है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर दिस एज वेल. एंड इक्वालिटी में हमारे पास, अगर मैं कोई पॉइंट मिस करूँ, रेहान, यू कैन ऐड हियर. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू फातिमा. जो चीज फातिमा के इसमें से जो चीज मुझे अच्छी लगी है, जिसको हमें ऐड ऑन करना चाहिए, दैट इज इंक्लूजन का जो होता है, दैट इज बायसनेस. हम इंक्लूसिव क्यों कहते हैं? ताकि उसकी एक्सेप्टेंस आए. when we hire someone, and bias is something which has a lot to do. There are two kinds of bias. One is negative bias and one is a positive bias. Negative bias means that some manager is biased toward a person without any reasoning. वो biased हैं और वो उनको preference भी दे रहे हैं without उनका कोई, हमने उस पे जिसे कहते हैं कोई criteria set नहीं किया. But there is one bias which is called positive bias. Positive bias means there is a person who is outstanding, whose work is good, who has all the qualities, all the ticks in the box which is required. And if that person is getting the opportunities, that is not called biasness. So हम इसी में जब इंक्लूजन में आते हैं तो फिर बायसनेस भी एक चीज आ जाती है, तो उसमें हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, दैट हाउ टू एड्रेस बायसनेस. सो देयर आर टू काइंड ऑफ बायस जो हम इस चीज में इंक्लूजन के साथ ऐड कर सकते हैं. सो एनी क्वेश्चंस ओवर हियर, देन वी कैन मूव ऑन. मेरा एक क्वेश्चन है मैम आप सारों से. मैम, मैं नंबर ऑफ इयर्स मैंने ये चीज नोट की है कि जब भी हायरिंग हो रही होती है मैम, तो आजकल इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है कि यार ये बंदा या बंदी व्हाटसएवर कैंडिडेट को नस से हो, JK से हो, लम से हो, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, या फिर मैम मतलब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हो. मतलब मैम, जब आप लोग हायरिंग की मतलब एक ग्रैंड स्टेरियोटाइप करते हैं, तो मैम फिर आपकी एक्सक्लूसिविटी तो ना रही? बिल्कुल भी नहीं रही. बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू, बिकॉज ये जिसे हम कहते हैं ना कि ये रिक्रूटमेंट में ये दीज थिंग्स डू लाइक इनका इम्पैक्ट जरूर होता है गुड यूनिवर्सिटीज, बिकॉज उससे फिर ये होता है कि आप अगर लम्स की बात करते हैं तो लम्स में कुछ ऐसे एरियाज हैं लाइक मैनेजमेंट साइंसेज में से, इफ यू हैव टू हायर समवन यू विल प्रेफर अ पर्सन फ्रॉम लम्स. सेम इज इफ यू वांट टू हायर समबडी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप UAT का या नस्ट का स्टूडेंट है आपके पास, ये फ्रेशर्स के लिए, इट इज नॉट फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन. जब आप का एक्सपीरियंस हो जाता है, then the recruitment team look for the experience, and degree is only to start the job. But I do agree with you कि this is not inclusion कि आप पहले से ही एक वो ब्रैकेट लगा दें कि जी हमें इस यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट चाहिए, ऐसा होता है. बट here the job of the HR comes, जितने आप ज्यादा इंटरव्यूज लेंगे उतना आपको पता चलेगा कि it's not only the university where the candidate is coming from, it is the experience that person is having, or maybe somebody from any other university and has more knowledge and ability to do that work.
So yes, this is there, इसको भी हमें खत्म करना चाहिए. Any other question? Otherwise we should move on. Thank you, ma'am. Okay, let's the next thing. सॉरी, मेरी पीपीटी जरा मैं दोबारा खोलनी पड़ेगी. Okay, so next thing which we are going to discuss is equal opportunity policy. हमने इक्वालिटी की बात कर ली, हमने इक्विटी की बात की, इंक्लूजन की बात की, डाइवर्सिटी की बात की. Equal opportunity की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? An equal opportunity policy is a company's formal document that outlines the commitment to fair treatment of all the employees, regardless of age, sex, race, disability, gender and religion or belief. Then again, equal opportunity को हम किस चीज से रिलेट करते हैं? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन से. तो जब आप भी आपने रिक्रूटमेंट कर रहे थे, अभी जब आपने ये डिस्कशन की रिक्रूटमेंट पे, तो आपने ये सारी चीजें आपने माइंड में रखी. एज, सेक्स, रेस, डिसेबिलिटी, जेंडर रिजेंटमेंट, रिलीजन और बिलीफ, इन सब चीजों को आपने माइंड में रखा था while doing your recruitment. जो रिक्रूटमेंट ड्राइव आप चलाते फॉर एनी पोजीशन, so these are the things equal opportunity policy के लिए the company should have these things in their mind. But an equal opportunity policy, the purpose of an equal opportunity policy is to provide transparency and accountability to your entire company about what constitutes fair treatment and what is considered discrimination, abuse and harassment. इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट discrimination, abuse and harassment, there should be a written policy about these things. Different organizations and different industries have different range of harassment. So उस harassment को address करने के लिए that kind of harassment should be there in the policy. There are different kind of, there's not only sexual harassment, there are different kind of harassments. तो उस harassment को identify करना और उसकी detail should be there in the policy. And फिर उसका क्या repercussions है and how you are going to address it. The discrimination के लिए, what is the policy your company have for discrimination? Discrimination हम जब अभी हम gender diversity की बात करें या हम वैसे diversity की बात करें तो discrimination आएगी तो inclusion नहीं रहेगी. So we have to have a proper policy for this thing as well. And abuse again, abuse is not allowed in any of the organizations. Direct discrimination and indirect discrimination. Direct discrimination refers to discrimination against a specific person. Basically, the possesses of protected characteristics. They are like received to have a protected characteristics or are associated with someone who does that, something like that. जो भी हम इसमें जो चीजें डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जो चीज हमने ऊपर बताई है, एज, सेक्स, उसमें से कोई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जांपल, if an employee was being harassed at lunch by other employee for following a specific religion, that would be direct discrimination. Like हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे हैं. लाइक हमारे मुल्क में तो एक रिलीजन सेम होने के बावजूद वे डिफरेंट सेक्ट्स. तो अगर उसके ऊपर एक डिस्कशन हो गया एट लंच आवर तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है. तो वो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. यू पॉइंटिंग आउट समवन डायरेक्टली. What is indirect discrimination? Indirect discrimination is when a policy, rules, or agreement that applies to all employees discriminate against a certain group of people. For example, say your company has a healthy living initiative that includes team excursions with activities like skiing, hiking, or bowling. अब इसमें indirect discrimination कैसे आ जाता है? Like अभी जैसे हम इसमें against certain group of people, like अगर हम
पॉलिसी एक आपकी एक ऐसी बनी हुई है जिसमें कुछ लोगों को लाइक, इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ कि लाइक हम जब एजुकेशन इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है कि आप अर्ली ईयर्स के लिए जब आप हायर कर रहे होते हैं तो देर समटाइम्स देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल, इफ अ फीमेल इज वेयरिंग अ हिजाब is not allowed to be in early years classroom. early years होते हैं जो आपके प्राइम 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के क्लासरूम्स होते हैं. In few school systems this was a discrimination, which is indirect discrimination. उसको कोई explain नहीं किया गया था, उसके ऊपर कोई policy नहीं थी, but it was a discrimination कि ऐसे ये चीज acceptable नहीं होगी, avoid this thing. Or again, if the activities जैसे skiing, hiking or bowling, and if we add swimming into it, in our culture swimming is again indirect discrimination हो जाएगी कि female can't do swimming. This is again indirect discrimination. So such kind of things are come into indirect discrimination, and direct discrimination is like आपने religion की बात की, आपने उसको point out कर दिया, so that is direct discrimination. So there should be a proper policy for these things. So we have done what is the act of including or the state of being included. Something included mean आपने उसकी acceptance लानी है. और diversity is a fact. Fact कैसे है? Your religion is a fact, your gender is a fact, your geographical condition is a fact, your language is a fact. So these are all facts. So or inclusion is to accept all those facts. And diversity and inclusion, आप इसमें ये this is again an exercise जिसको हम कर सकते हैं. अभी हमारे पास आज time नहीं है, but we can do this exercise somewhere some other time. That leadership, commitment and accountability, global diverse talent, inclusive workplace, best in class employers. तो आप इसकी एक picture ले सकते हैं. We are going to do this exercise later sometime, जिसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि लीडरशिप, कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी. लीडरशिप के साथ अकाउंटेबिलिटी है. ग्लोबल डाइवर्स टैलेंट क्या है, इंक्लूसिव वर्क प्लेस क्या होती है, और बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जिसको हम कहेंगे दे आर द बेस्ट एम्प्लॉयर्स. देयर इज अ चेन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. देयर आर पीपल, दोज हु आर गोइंग टू go to the workplace, and the workplace go to the marketplace. People are people resource groups, mentoring. You have to retain the employed people. Then workplace में क्या हो रहा है? Workplace में training हो रही है, workplace planning है, execute diversity council or diversity advisory councils. So here at the workplace you have to manage these people. उनके लिए आप training करवा रहे हैं, उनको आप डाइवर्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं. यू आर डेवलपिंग दैट वर्क प्लेस. पीपल आर देयर, यू हैव हायर्ड देम, आपने रिक्रूट किया, जैसे भी आपने पूरी रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी की, आपने वो रिक्रूट कर लिए बंदे, तो और आप उनकी मेंटोरिंग करें. दीज आर हाउ टू रिटेन देम. Then you are developing those employees. When you are developing those employees, you are giving them trainings, you are having discussions with them, you have advisory council on diversity. Then what is the marketplace? Branding, employee branding क्या हो रही है? उसके अलावा आपकी strategic partnerships किसके साथ हैं? Supplier diversity is again a big thing. आप एक ही supplier से आपने नहीं लेना, एक ही को आपने नहीं देना. So there should be a diversity there as well. Philanthropy है. So this is how you attract. So this is again a chain of diversity and inclusion. People, workplace and marketplace. People, you are going to retain people, you are going to workplace पे आप उन्हें develop करेंगे, attract किसको करेंगे? Marketplace को attract करेंगे. Okay. Diversity and inclusion, comparing diversity and diversity क्या है? Legal, avoid penalty, like और क्या remedial है, imposed है, visible differences हैं, demographic profile changes हैं, और these are all जो हमने discuss किया. Inclusion क्या है? Inclusion में आ जाता है आपके business enhancement, performance है, strategic, internally driven है, visible and invisible differences है, cultural change and everyone. So ड्राइविंग फोर्स क्या है इसमें? ड्राइविंग फोर्स आपका बिजनेस है. कल्चर ऑफ चेंज क्या है? व्हेन आप कोई चीज इंपोज करते हैं तो आपका कल्चर चेंज होने शुरू होता है. विजिबल डिफरेंसेस फोकस से आता है. एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंजेस
इम्प्लीमेंटेशन से आपका कल्चरल चेंज आता है. व्हेन यू हैव अ कल्चरल चेंज एंड माइनॉरिटीज है या उनका तो टारगेट पॉपुलेशन आपकी क्या है, टारगेट पॉपुलेशन आपकी एवरीवन है. तो आप इसको डाइवर्सिटी को एक साइड से देखिए, डाइवर्सिटी का ड्राइवर्स क्या है, किसके लिए आपको डाइवर्सिटी चाहिए, बिजनेस एंड एनहांसमेंट परफॉर्मेंस के लिए, रिमीडियल और इम्पोज्ड कल्चर ऑफ चेंज के लिए, विजिबल डिफरेंसेस फोकस करके विजिबिलिटी अपनी इंप्रूव करने के लिए. सो दिस इज हाउ यू मेक facts into acceptance. There's a very simple way to understand is diversity and inclusion is that diversity is a fact and inclusion is to accept that fact in an organization for development of the business. Challenges of diversity and inclusion kya hai? Challenges kya hai? Lower cohesiveness, communication problems, stereotyping, mistrust and tension, unexamined assumptions. ये challenges क्यों हमें आते हैं? Just think on these lines. I'll give you 5 minutes. Just think कि ये challenges को हम address कैसे करेंगे. And do you think that do you face all these challenges in your workplace? Unexamined assumptions, lower cohesiveness, communication problems, stereotypes, and mistrust and tension. Take 5 minutes and just think about it. Then one or two of you are going to discuss this, that are these the challenges which we face for diversity and inclusion, or they are not relevant, they are irrelevant. So just take 5 minutes. It's 8:03, so till 8:07 you can think on it individually and then we'll discuss. Okay. Now, let's discuss on this. When we talk about challenges, so anyone can discuss that. Have you ever faced these challenges in your workplace?
Like अगर हम communication problems की बात करें तो would the communication problem would affect the diversity or inclusion? किस चीज को affect करेगा, किस चीज पे हमें ये problem देगा? Any one of you can add on. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स दोनों ही पे इम्पैक्ट करता है। मैं कम्युनिकेशन की वजह से काफी चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। मैसेज कुछ और कन्वे होता है, परसीव कुछ और होता है, पॉलिसी कुछ और होती है, उसे कम्युनिकेट किसी तरीके से डिफरेंट से किया जाता है। मैम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन आई थिंक ये बहुत पे इम्पैक्ट करती है, दोनों को इम्पैक्ट करेगा। In your view it will impact both. So what about stereotyping? Stereotyping किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा? मैम आई थिंक ये डाइवर्सिटी को ज्यादा इम्पैक्ट करता है स्टीरियोटाइप। कि मैम यू आप एरिया को डिजाइन कर लेते हैं कि शायद यहाँ के लोग ही ऐसे हैं या उनकी सोच ऐसी है, तो मैम तो ये जब हम अगेन जब हम स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं तो वो भी, तो जब हम स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं ना, दोनों चीजों को इफेक्ट करता है। पहले तो आपने जब हायरिंग के वक्त हायर्ड, तो हम ये क्या करते हैं, फिर हम जब एक्सेप्टेंस की बात आती है, द एक्सेप्टेंस इज लेस। स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आपकी इंक्लूजन में भी इफेक्ट आता है, बिकॉज आपकी एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। फैक्ट तो है कि इट्स अ स्टीरियोटाइपिंग थिंग, बट उसको एक्सेप्टेंस जो है वो इंक्लूजन से आनी है, तो वहां पे भी ये चीज इफेक्ट करती है। एनीवन एल्स वांट टू शेयर दैट हैव यू फेस्ड दीस चैलेंजेस इन योर वर्कप्लेस, और इफ यू आर फेसिंग एंड डीलिंग सच चैलेंजेस? Okay, these are the basic challenges जो मेरा ख्याल है everybody is facing. So let's move on now. The next thing which we are going to discuss is that diversity and inclusion की strategy क्या होनी चाहिए? Attract and recruit from a large and diverse pool of talent. Diverse pool of talent, जैसे भी आपने recruitment की पूरी discussion की, तो diverse pool आपने generate कर लिया। Secure and inclusive workplace culture. जहां हमने HR ने काम करना होता है वो वर्कप्लेस कल्चर होता है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, पीपल एंड वर्कप्लेस। सो वर्कप्लेस की मैनेजमेंट किसके पास होती है? HR के पास होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डेवलप अ डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट। अगेन दिस इज द जॉब ऑफ द HR। ये इन बिटवीन जो हम चल रहे हैं, जो वर्कप्लेस के ऊपर ये काम हो रहा है, दैट डेवलप अ डाइवर्स पूल ऑफ, आपने पहले एक टैलेंट लिया, उसको आपने डेवलप करना है, डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Leverage D&I in the marketplace in partnership with customers, suppliers, and communities. So first आपने attract किए लोग, या आप diverse आपने एक diverse recruitment की, फिर उनको आपने develop किया, and then you have provided it to the market. आपने suppliers के through, customers के through, and communities के through उनको attract किया to use that diverse pool of employees. मैनेजमेंट अवेयरनेस, कमिटमेंट एंड बिहेवियर। क्या चीज इफेक्ट करती है? मैनेजमेंट की अवेयरनेस, उनकी कमिटमेंट एंड बिहेवियर। ये स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए इन तीन लोगों का, मैनेजमेंट की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उनकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है, द बिहेवियर इन विच दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। Goal of diversity and inclusion, workforce diversity, recruit from a diverse qualified group of potential applicants to secure high performance. Workplace inclusion, cultivate a culture that encourages collaboration, flexibility, fairness for all to contribute full potential. Sustainability, develop structures and strategies to give leaders ability to manage diversity, be accountable, measure results, refine approaches. Accountability and measuring result is also very important. It's not only that we are going to work for diversity and inclusion, and our focus is not on the accountability and the results, because whenever you are working, there are some targets which you have to achieve. So the result oriented development of the employees is also very important to make that thing sustainable. So workforce diversity, then workplace inclusion and sustainability. आपने workforce को diverse करना है, workplace को inclusive बनाना है to make a sustainable development.
What are some of the benefits of workplace diversity and inclusion? Improved understanding of those you work for, with, and around. Create a work environment that allows everyone to reach their full potential through development. Provides multiple perspectives on problem solving, better performance outcomes, increase employee productivity, increase retention rates, boost employee morale, improved member relations, and reduce complaints. If you have diverse culture in your organization and there is inclusion as well, तो इन सब चीजों का आपको फायदा होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड रिटेंशन रहेगी, बिकॉज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है जो एचआर फेस करता है दैट इज रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज. सो इफ यू वांट टू रिटेन योर एम्प्लॉइज यू हैव टू गिव देम अ डाइवर्स कल्चर, because that is where you can attract them indirectly. Salary is one thing, salary to aap de rahe hain, lekin salary is only monetary thing. What is important is that how diverse is the culture, how inclusive is the environment, how are you dealing with the equity. So these are the things important which help you to retain your employees. Diversity, a big mission statement, mission है, vision, values आपकी. और फिर सबसे पहले आपने इंटरव्यू किया, रिक्रूट किया, हायर किया. क्या किया आपने ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट एंड लर्निंग रिसोर्सेज, मेंटोरिंग, कोचिंग, अट्रैक्शन, रिटेंशन, कल्चर कॉम्पिटेंसी, बेनिफिट्स, मैट्रिक्स, ये सब वो चीजें जो एचआर दे रहा है. यहाँ से कहाँ गए हम? वेंडर, ये आपका पहले एम्प्लॉय हो गया, फिर उसके बाद आपकी वर्क प्लेस हो गई, देन मार्केट प्लेस हो गई. उससे क्या गेज करेंगे आप? परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड परफॉर्मेंस. सो दीज आर 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने लेके चलना है. कि आपने सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट आ गई, इसके अंदर वर्क प्लेस में जो आप डेवलप करेंगे वो आपने मार्केट में अट्रैक्ट किया है. उससे क्या करेंगे आप? गेज करेंगे, आप उनकी परफॉर्मेंस गेज करेंगे. सो diversity and inclusion helps you to work in performance management as well. Traditional diversity and inclusion strategy process, strategy committee establish करें आप एक. High potential business leadership, human resource leadership, it takes to information collected. जो आपके पास information आपने collect किया है, SWOT analysis किया है, employee engagement data आपके पास, demographic information है, recruitment है, turnover data है, benchmark and trends reviewed है, external commitments हैं. आपकी एक पूरा process चल रहा है. सबसे पहले आपने strategy बनाई है, उसके बाद आपने information collect की है, information के बाद recommendations form किए हैं, एक्टिविटीज डिफाइन है, फिर बजट प्रपोज है, फिर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और एफआर लीडर reviews and signs off. The sign off is attained, implementation begins. So this is the process in which you can develop or add diversity and inclusion in your organization, and this process can be utilized in any not only for diversity and inclusion, for any of the HR aspect can be utilized. Now this is important, that this is maturity matrix क्या है, level 1 पे क्या basic क्या है. D&I is on their agenda for discussion, but no concrete plans are in place to define or achieve desired outcomes beyond those recruitment, because those requirements by regulation. The operation group or business will put additional measures in place to respond to any problems. Level 1 के basically basic आपकी क्या है कि there is an agenda and discussion. How यह बात क्या करें? D&I enhances our competitive advantages. कैसे? Level 2 पे क्या? Awareness है. Diversity is increasingly recognized as a business benefit, and an inclusive culture is acknowledged as key to success. D&I initiatives are developed at a local level and monitored to support continuous improvement. See, when you पहले तो बेसिकली आपने डाइवर्सिटी एंड कल्चर के बेसिक उस पे आए, फिर आपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट की, अवेयरनेस के बाद आप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पे गए. मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेस द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट it is implementing D&I strategies designed to create an inclusive work environment.
अवेयरनेस के बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन हुई तो आपकी इन्वायरमेंट इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट की तरफ आप जाने शुरू हो गए। फिर वो इंटीग्रेट कैसे हुई? DNI इज फुली इंटीग्रेटेड into day-to-day activities. Management is committed to creating an environment that supports D&I and encourages the right behavior. D&I initiatives reflects local needs and support the success of the operating group of business. So यहाँ पे integration होगी. Sustainable कैसे बनाया? D&I is how things are done. It is part of business as usual and embedded in day-to-day activities. D&I diverse strategy. They impact on business performance in clear and D&I enhances competitive advantage. So हम जब बात करते हैं कि हम कोई भी चीज जब कर रहे होते हैं तो in the end हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है business development, a sustainable way of doing it. तो मेक इट सस्टेनेबल, तो आप लेवल 1 से शुरू करते हैं। लेवल 1 में आप अवेयरनेस देना शुरू करते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी एंड कल्चर को इम्प्रूव करना है, आप बेसिकली तो पहले डिस्कशन पे आते हैं। डिस्कशन के बाद उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इन योर मैनेजमेंट, देन उसकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लाते हैं। आपकी मैनेजमेंट को जब समझ आ जाता है तो वो उसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। डाइवर्स जो आपके पास पूल ऑफ पीपल है उनको, जब वो पूल ऑफ पीपल जब आपको समझ आ जाता है कि इनको हमने यूटिलाइज करना है, तब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं इन डिफरेंट रोल्स। जब वो डिफरेंट रोल्स में ह्यूमन रिसोर्स को आप इंटीग्रेट करते हैं तो दैट वेयर द बिजनेस बिकम सस्टेनेबल एंड देयर इज अ रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। How things are done. There are different ways of doing it. When you talk about diversity, there are different way of working in a collaboration. So this is how you this is the process in which diversity and inclusion can be added in any of the organization for the improvement of business. कोई भी चीज हम बिजनेस प्लान के बगैर तो नहीं करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। Our main goal is to develop the business. Benefits come from combination of high diversity and high inclusion. Low work satisfaction, high employee turnover, weak employer brand, low creativity and innovation, poor safety record. High पे चले गए आप, low पे कैसे होगा कि high work satisfaction, healthy employee turnover, strong employer brand, high creativity and innovation, high adaptability, agility, good safety record, high work satisfaction. So this is how it work. हम लो से हाई की तरफ हमने लेके जाना है। जब आपका डाइवर्सिटी आपकी हाई होगी तो आपकी इंक्लूजन भी हाई हो जाएगी और इन द एंड इट विल develop the business, it will make it sustainable. What I would like you to please understand is this is important. This is important. This process is important, that how you can inculcate diversity and inclusion in your organizations. Strategy committee की establishment is very important. आप पहले committee की establishment करते हैं जिसपे जो discussion table पे जाती है, फिर information collect की जाती है. There are different ways of collecting information which is given there. There are other ways as well. Everything is data driven these days, so you have to collect a lot of data for information, and then recommendations. Of course, the senior management and the HR department going to sit and give recommendations, activities जिसके लिए define करेंगे, budget propose करेंगे, and then executive leadership will going to execute that, and then it will become part in the process of your diversity and inclusion. Here comes the next step. Here it will start now. This is the process. Here you are going to end this process, and then you start from level 1. So maybe your company is at level 1 at the moment. Maybe few companies are at level 2, maybe at level 3. When you become at level 5, your company is more sustainable and there is more business development because of the diverse culture and inclusion. So this was today's discussion. Now we have 10 minutes for question answer session. The last 2-3 slides were a bit difficult to understand. उस process को Mansoor Sahab is going to share the presentation with you. जब आप उसको दोबारा discuss करेंगे, when you go through with that, तो आपको वो clarity के साथ समझ आएगा, process आपको ज़्यादा clear होगा. So if you have any questions, you're most welcome.
Any questions? If you don't want to speak, you can write in the chat box. जी कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाइवर्सिटी को हमने पढ़ा। आइडियलिस्टिकली तो बहुत सी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की ना, लेकिन बहुत सी चीज़ों में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चलती है जो ग्लोबली नहीं हो रही, जो भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे नहीं हो रही। जैसे पाकिस्तान में एज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है। अगर देखा जाए ना, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि आप लगा देते हैं एज ब्रैकेट को, या और भी बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, या किसी की किसी तरह की कोई ओरिएंटेशन होती है, तो ये सब लोग करते हैं। लेकिन ग्लोबली जब हम देखते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्करेज किया जाता है कि आपको यानी कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन करनी नहीं चाहिए, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूजन को लेके आना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने लम्स की और बात की और IBA वगैरह की, इस तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की। प्रैक्टिकली वहाँ पे ये किया जाता है कि जी उन लोगों को प्रेफर किया जाता है, ये एक रियलिटी है। लेकिन क्योंकि लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसको वो कि डिस्करेज, इस एटीट्यूड को, इस ट्रेंड को लोग डिस्करेज भी करते हैं। लेकिन ये है इस वक्त करंटली ना। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन कोई आप देख रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एक्सपीरियंस में रेलेवेंट कोई बनता है क्वेश्चन, तो आप ज़रूर करें। अभी यहाँ पे कर लें, राइट डाउन करके कर लें, या ग्रुप में बैठ के कर लें ना, तो आप कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल अगर वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगता है कि कोई डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, इंक्लूजन की तरफ लोग जा नहीं रहे, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सी डाइवर्सिफाइड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं इस सेशन के अंदर ना। तो एजुकेशन का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, रिटेल का सेक्टर है, IT का सेक्टर है। तो हम एक दूसरे के लिए, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इन चीज़ों को लर्न करें, एक दूसरे की इंडस्ट्री के हवाले से इन चीज़ों को, इन ये जो रुझानात हैं, जो ट्रेंड्स हैं, इनको सीख सकें और दूसरों के लिए भी फैसिलिटेट कर सकें, और लोग भी हमारे हमारे जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख सकें, उनसे लर्न कर सकें। If you have questions, you can ask later on as well. अपन ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो प्रोसेस के बारे में, अगर बिकॉज प्रोसेस इज अ डिफिकल्ट थिंग जिसको समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू विद द स्लाइड्स अगेन। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you can add those questions in the group. We can answer you there as well. ठीक है, हम इस सेशन को अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो बाद में मैं सब लोगों के साथ मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, और जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, राइट। तो कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रेहान, थैंक यू एवरीवन for your sparing your time. Thank you so much, everyone. Thank you so much. It was a good discussion today. We had a lot of healthy discussion. And just to give you a quick recap, what we did today, we understand what is diversity. Diversity is a fact. We understand what is inclusion. Inclusion is to accept that. Then we have discussed bias kya hota hai. Then what is equity? Equality क्या है, equity क्या है, equality हम दे रहे हैं, equity कैसे हम provide कर सकते हैं, and then inclusive environment से how can you develop your business development में diversity and inclusion का क्या role है, and then that role how to have that process, if it is not there, then how you can develop that process in your organization to have diversity and inclusion in your organization for sustainable business development, not only for employees, for employers as well. Normally जब हम इसकी बात करते हैं diversity and inclusion की, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हम employee के लिए बात कर रहे हैं, but it's not only for employee, it is for employer. जैसे भी आपने रिक्रूटमेंट की डिस्कशन की है, तो रिक्रूटमेंट में आपने जब डाइवर्स पूल लेकर आए हैं, तो दैट डाइवर्स पूल इज फॉर द डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट for the organization. So everything in the HR is directly related with the employer and the employee.
And just thinking that diversity and inclusion is only for employees, no. Diversity and inclusion is a basic part and an integral part of the business development as well. So this was the crux of today's session. Go through with the slides. If you have any question, you can ask me in the group as well. And you can ask Mansoor Saab, we can do that as well. Okay. Thank you so much. Sure. Thank you very much for having such a wonderful session. Take care. Have a nice day. दोबारा कल आप लोगों से मुलाकात होती है. कल फिर हम डिस्कस करेंगे. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.